और चैनल सही है। आज हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे हम व्हाट इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, अ मूवमेंट अ मेजर ऑफ टेंडेंसी of force rotate an object about axis and point. It does not move to object linearly but causes it turn or rotate. It also known as torque is some context in rotational system. Movement refers to rotational effect produced by a force applied a distance, fixed point or axis. It is help explain how and why object rotate turn when force is applied. अब देखेंगे डेफिनेशन। A movement is product of a force is perpendicular distance from a fixed point, means point or axis of rotation. मूवमेंट का फॉर्मूला है मूवमेंट इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मूवमेंट दो टाइप के होते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। सबसे पहले क्लॉकवाइज मूवमेंट, व्हेन अ फोर्सेस टेंडेंस टू रोटेट द ऑब्जेक्ट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Anti-clockwise movement, when a force tends to rotate the object anti-clockwise direction. अब देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। if a body rotational equilibrium, then a sum of clockwise movement about point equal the sum anti-clockwise movement about the same point, means summation of movement clockwise is equals to summation of movement anti-clockwise. The principle used balancing beam, levers and mechanical structure. अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ मूवमेंट इन मैकेनिक्स। उसके 8 एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले लीवर सिस्टम। लीवर इज़ फंडामेंटल मैकेनिकल एलिमेंट, द वर्क एंड बेसिक मूवमेंट ऑफ द फोर्स डिपेंडिंग ऑफ द पोजिशन of load effort levels to classify into plus classes is seesaw, second class is wheelbarrow, third class is humans arm. Used to amplify force is movement. Second application, beam and support system. Beam is mechanics are supported end to make carry point load distributed loads. Each load creates movement around the supports. Engineers calculate by handling movement, shear force, designing stable beams and truss. Third was static equilibrium is rigid body. A body is static equilibrium must satisfy summation of F is equals to 0 and summation of M is equals to 0. Used to solve mechanical equilibrium problems such as frames, ladders and poles. Fourth application है torque is shaft is rotating mechanics. Torque is rotational equivalent of the movement in shaft. Motors engineer produce the rotate mechanical part. Designing derived system involves torque and power calculation. पांचवा एप्लीकेशन ये मूवमेंट इज कैंटिलिवर स्ट्रक्चर. कैंटिलिवर आर द बीम इज फिक्स्ड one end to free at the other. The applied load free and creates binding movement is fixed support. Common is bridge, balcons, robotic arms etc. Sixth वाला एप्लीकेशन है movement distributed movement. Uses structure analysis determine internal movement and statically intermediate structure. Engineer the method of ensure structure can be bear loads without failure. Seventh application है movement frame and truss. Truss of the frame is analysis using movement equilibrium. The helps of identify zero force members is designing lightweight strong structure. आठवां एप्लीकेशन है मैकेनिक्स एंड मैकेनिज्म्स. ऑल मैकेनिज्म्स लिंक्स एट जॉइंटेड क्रिएटेड एंड ट्रांसफर मूवमेंट. एग्जाम्पल crankshaft is engine convert. Linear piston motion is rotation using motion principle. Mechanism analysis use couple and movement sum. Thank you.